भारत के संविधान में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी नियम और अधिकार जो आम नागरिकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। मौलिक अधिकार राइट्स। अनुच्छेद 12 समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने और पेशा चुनने की आज़ादी। अनुच्छेद 2 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। गरिमा के साथ जीने का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार। छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कानूनी अधिकार और नियम। अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। संविधान का पालन करें और उसका आदर करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, वैज्ञानिक सोच और मानवता को बढ़ावा दें। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 25 किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांगने का अधिकार। धारा 498A भारतीय दंड संहिता महिलाओं को दहेज और घरेलू हिंसा से सुरक्षा। धारा 375 और 376 बलात्कार और यौन उत्पीड़न के खिलाफ कड़े कानून। दैनिक जीवन में उपयोगी कानून। धारा 290 अश्लीलता, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करना अपराध है। धारा 129 पुलिस अधिकारी बिना वर्दी के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। 3 मोटर वाहन अधिनियम 1988 सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के सभी दस्तावेज रखना अनिवार्य है। सार धारा 185 शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना और सजा। धारा 498A किसी महिला के साथ पति या ससुराल पक्ष द्वारा अत्याचार करना अपराध है। श्रम और रोजगार से जुड़े कानून। हर कर्मचारी को न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान छुट्टी और वेतन का अधिकार। ESIC और PF नियम। कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा और भविष्य निधि का प्रावधान। महिला अधिकार। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा पोस्ट एक्ट महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार। भ्रूण हत्या प्रतिबंध गर्भ में लिंग जांच कराना गैर कानूनी है। 6 उपभोक्ता अधिकार। 1 उपभोक्ता सह संरक्षण अधिनियम 2000 किसी उत्पाद या सेवा में कमी के लिए शिकायत दर्ज करने का अधिकार। नकली सामान बेचने वालों पर कार्रवाई। अगर आपको किसी खास कानूनी मुद्दे पर जानकारी चाहिए तो बताएं। As an employee in India, you are governed by several laws and regulations designed to protect your rights and ensure a fair and productive workplace. Here are some key rules you should be aware of. 1. Employment rights. 1. Right to minimum wages. Minimum Wages Act, 1948. You are entitled to a minimum wage as prescribed by your state government for your role in industry. 2. Working hours and overtime. Factories Act, 1948. Standard working hours are 8 hours a day and 48 hours a week. Overtime is to be paid at twice the regular wage rate. 3. Right to leave. Annual leave. You are entitled to paid leave, usually 12 to 15 days annually, depending on the employer's policy. Sick leave. Provisions vary by employer, but most offer 6 to 12 days of sick leave. Maternity leave. Maternity Benefit Act, 1961. Female employees are entitled to 26 weeks of paid maternity leave. 2. Workplace safety and equality. 1. Workplace safety. Factories Act, 1948 and OSHA. Employers are responsible for providing a safe working environment. 2. Prevention of sexual harassment. POSH Act, 2013. Employees have the right to work in an environment free from harassment. A formal mechanism should exist for reporting and addressing complaints. 3. Equal Pay, Equal Remuneration Act, 1976. Men and women must be paid equally for the same work. Gratuity and Provident Fund. 1. Gratuity, Payment of Gratuity Act, 1972. You are entitled to gratuity if you have completed at least 5 years of continuous service with an employer. 2. Provident Fund, EPF and MP Act, 1952. Both employer and employee contribute to the Provident Fund, which ensures retirement benefits. Act 4. Rights on termination or resignation. 1. Notice period. Employers must give prior notice or pay in lieu of notice before terminating employment. Notice periods are usually mentioned in the employment contract. 2. Severance pay. In case of retrenchment or layoffs, employees may be entitled to compensation. 3. Full and final settlement. Employers must settle all dues, salary, gratuity, PF, etc. within a stipulated time after resignation or termination. 5. Anti-discrimination laws. 1. Prohibition of discrimination. Employers cannot discriminate based on caste, religion, gender, or disability under the Constitution of India and various labor laws. 2. Reservations for certain categories. Reserved categories, SC, ST, OBC, may receive specific workplace benefits as per government norms. 6. Additional employee benefits.
1. ESIC, Employees State Insurance Corporation, provides medical and sickness benefits to employees earning below a certain threshold. 2. Bonus, Payment of Bonus Act 1965. Employees earning below $21,000 are entitled to an annual bonus between 8.33% and 20% of their salary. Employee responsibilities. 1. Follow workplace policies. Adhere to rules regarding attendance, punctuality, and dress code. 2. Maintain professional conduct. Avoid unethical practices such as fraud, harassment, or leaking confidential information. 3. Adhere to employment contract. Fulfill duties as per the terms agreed in the employment contract. By understanding these rules, you can safeguard your rights and ensure a respectful and legally compliant work environment. If you face any issues, consider reaching out to your HR department or labor court for assistance.